morning, Assalamu alaikum everybody. Welcome back to our art session, and today I would like to invite our arts teacher Sir Mushtaq. Hello everyone and hello Arisha, how are you beta? I'm fine, sir. How are you? I am fine. Okay, तमाम देखने वालों को और व्यूवर्स जो भी हमें देख रहे हैं वहाँ पर आज हम आपके लिए ला रहे हैं बहुत अच्छा सा, बहुत इजी सा आर्ट ट्रिक. Okay, sir. So what we are teaching? आज मैं आपको सिखाऊंगा क्रेप पेपर से फ्लावर्स बनाना. Okay. फ्लावर्स बाय यूजिंग क्रेप पेपर. तो शुड वी स्टार्ट? Yeah, sure. Let's अच्छा start. अरीशा, मुझे बताएं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मैं रेड कलर्स का फ्लावर्स बनाऊं या फिर वाइट? Sir, I would suggest we should make white. वाइट? Yeah. ओके, चलें हम वाइट क्रेप पेपर ले लेते हैं. उस Okay. क्रेप पेपर से हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप हम लेंगे एक Ruler. रूलर, देन Sharp scissor. शार्प सीजर, देन पेंसिल. Okay. ठीक है. फर्स्ट हमें यहाँ पर 8 इंचेस का पीस हमें लेना है. 8 बाय 8 लाइक दिस. आई नीड अ पेंसिल. हम 8 इंचेस पे निशान लगा देंगे और 8 इंचेस में निशान लगाने के बाद हम इसे कट कर देंगे बाय यूजिंग Sharp scissor. शार्प सीजर लाइक दिस. Put it over there. Now I am going to open this crepe paper. Okay. It's a very long piece. तो हम इसे ओपन कर देंगे वन बाय वन करके. एंड बहुत इजीली, बिकॉज ये क्रेप पेपर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं अगर हम इसे सही से यूज़ नहीं करते हैं तो. लाइक दिस. डन. Yeah. और इसके बाद फिर हम इसे दोबारा फोल्ड करेंगे. Okay. देन क्रीज, Fold and crease. Fold and crease. fold and crease like previous class like this. Okay. Done. Yeah. Then the next step is, जब ये हम बना लेंगे उसकी लेयर्स हम देखेंगे. बहुत सारी लेयर्स हम यहाँ पर Yeah. दिखा रहे हैं I can अपने see that. व्यूवर्स को. ठीक है. हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे छोटी छोटी पीसेस में लाइक दिस. ऐसे. वन, देन बैक फोल्ड, देन बैक फोल्ड एंड क्रीज, देन बैक फोल्ड एंड Crease. crease, then back fold and Crease. crease. Very good. Now it's almost done. Then हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे like this. Okay. ठीक है. और इसे हम थ्रेड की मदद से हम इसे बांध देंगे like this. You must do it neatly. Yes, yes, yes. Every work needs neatly work like this. Okay. Then the next step is हम इसे फोल्ड करेंगे from the center. ठीक है. अभी हम चेक करेंगे सेंटर है, बिल्कुल सेंटर है. अब क्या करेंगे, हम इसके जो साइड्स हैं उसे हम राउंड कर देंगे. हाफ राउंड कट लाइक दिस. Okay. Please throw in the dustbin. Thank you, Arisha. Like this. It's almost done. So it's for the petals. Yeah, Okay. it looks like a petal of a crepe paper. Then we are going to open it like this. और फिर हम इसके वन लेयर करके उठा लेंगे like this. Okay. You One have to layer, open it. Open it. It has almost 8 to 10 layers Oh. like this. Like this. Just take upper petal and open it. It will take some time, but don't worry. That part is ready. Yeah, one part is ready.
I'm going to read the second part. Open it properly. Okay. Can you open any petal, Yeah, I can. please? Very good, Arisha. Very good, very good, very good. Please try it at your home. Is it okay? Good. Wow, Arisha, it's look very nice. Look at here, viewers. Now it's time to use another color paper of green Okay. for petal and Stem. या तो फिर मैं क्या करूँगा, इस पेपर को A4 पेपर को सेंटर से फोल्ड कर दूंगा और क्रीज कर दूंगा. क्या कर दूंगा मैं? Fold and crease. Fold and crease. Then I'm going to cut by using scissor or by using Scale. scale. I have how many pieces over here? 2. Two pieces. Now I am going to fold Sir, why are we using the stick? for the stem, na beta? Okay, to For support. folding. Yeah. Like this. You can use your pencil, you can use your pen Oh, like this. Now it's time to use the glue. glue over here. It looks very neat. Then it's almost done. Okay, The stamp is done. now it's time to make the Leaves. leaves. For the leaves, I am going to take this another piece. Okay. Then I'm going to fold it from the middle side, and I'm going to design a petal over here. I'm going to design a petal over here. And Cut it. cut it. Can you? Yeah, I can. Yes, please. Very good, Arisha. Nice cutting. Thank you. It's done. That's great. That's great. Thank you, Arisha. You are a very nice helper. Now it's time to paste all the things Together. together. For the first, I'll take the Flower flower and stem. stem. It's time to Paste paste it the together. stem like this. मैं इसकी टॉपर पोजीशन में ये ग्लू लगा दूंगा और इस ग्लू लगाने के बाद मैं इसे इस फ्लावर में बैक साइड पे इसे पेस्ट कर दूंगा लाइक दिस. लाइक दिस एंड होल्ड करके रखना होगा मैं थोड़ी देर के लिए. देन Let it dry. it's almost done. Now it's time to paste the Leaves. leaves. For leaves, I will use again glue. फिर मैं इसे इस लीव को इस पे पेस्ट कर दूंगा और इसे हल्का सा अपने थंब की मदद से हल्का सा राउंड कर दूंगा ताकि वो एक शेप आ जाए. Okay. Okay? Now it's time Shall to I paste. try? Yes, why not? Why not, beta? Good, very good, very good. Now it's almost done by our side. The flower is Ready. ready. A flower by crepe paper. It's quite easy. Yeah, it's very easy. It's very Yeah. easy. It's very easy. Now I have different colors of flowers over here. Oh. Red, Yellow. yellow,
More red, another, and yellow over here. They look beautiful. Yes, I'm surely gonna try it. you have to try it at your home. I hope you guys learned a lot from this session, and inshallah we'll meet in the next session. Till then, bye bye. Bye-bye.